हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वसीम मुल्ला, मुंबई सबर्ब्स के एक छोटे शहर अमरनाथ से। आई एम श्योर आप लोग शायद ही मुझे जानते होंगे। मैं इंडिया का एक नेशनल एथलीट हूं जिसने बहुत मेहनत और अरमानों से अपने देश के लिए मेडल जीता है। मैंने 2018 में मलेशिया में हुए ओपन इंटरनेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में ट्रिपल जंप इवेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीता है। इंडिया को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करने का ख्वाब था, कोशिश रही और वही ख्वाब पूरा करते करते इस मेडल तक पहुंच गया। काफी साल की मेहनत, स्ट्रगल और जिम्मेदारियों से होकर बिना कोच और फैसिलिटीज के अकेले प्रैक्टिस कर कर यहाँ तक का सफर काफी रोमांचक रहा। अपनी पढ़ाई, जॉब, घर की जिम्मेदारियां निभाकर अपना पैशन और ख्वाब पूरा करना ये सबसे मुश्किल कामों में से एक है। हर खिलाड़ी की अपनी कहानी है, अपना एक स्ट्रगल है। अब जानेंगे मेरी कहानी इंडिया पॉडकास्ट पर। Hi Wasim, thank you so much for joining us on India Podcast today. It's a pleasure to have you with us for our people listening to you and watching you here. Hi, thank you. I'm also grateful coming here. Nice. Wasim, your story is very, very interesting. We would like to know more. First, to understand from you, how do you look at yourself? You're a sports person, you're an athlete for that matter. So could you help us understand how Wasim Mulla looks at himself as a sports player who has got pride to India in various games that you've represented India in. You've had your own journey. So how are you looking at yourself as a sports person, as an athlete coming through this journey? If you call me, I would call myself a sportsman. When you just say a sportsman, there are two aspects to it. It's not just like a sportsman by performance. It's also by sportsman by spirit. Because it's very important to have your sportsman spirit, which keeps you moving on, like never give up. So as a sportsman, every sportsman is called an athlete. Basically, since I play athletics, I am an athlete. From an athletics discipline, I play triple jump. Okay. It's been a long struggle. After a long hard work. Considering the age, I have been very late to represent India, but it was a dream that to somehow reach to that level and like don't just give up. It was just like होता है ना, जिद होती है, तो वो एक जिद थी, उसके लिए struggle करते गए, मेहनत किया और फिर then I reached a goal. Luckily got a chance to represent the country, not just represent, bring a medal for the country. अच्छा रहा एक सफर. You have spoken about this journey. You've balanced your career and your passion. It's something that you've passionately followed while you were pursuing your normal life of doing your IT professional job. You're a son of a sportsman who has been a Ranji Trophy player, your father. So how difficult was it for you to create that balance? Because there you're living a passion life where you have to, after every normal day, after your duty, after your job, you run back to your passion. So what took to you? क्या चलता था पूरे दिन आपके साथ कि आपको वो बैलेंस रहता था? You would have less sleep hours, आपके hours बढ़ गए होंगे, पढ़ाई होता होगा या जॉब होता होगा. So how can you tell us that part? How did that journey really play out? Well, देखिए, actually this is one of a fact. अपने इंडिया में बहुत सारे athletes हैं which are not highlighted और it's a struggle with every Indian athlete, you can say. Yes. कैसे होता है कि normally you're not paid to play. So ये एक concept है. Compared to advanced countries like Australia and US, wherein अगर मैं sportsman हूँ, अगर मुझे sports में focus करना है, if I want to make a career in sports, so I would be more pushed towards that, form courses, certifications, and I'll be paid to play, perform. So these things happen. But अपने साथ ऐसा नहीं होता, अपने ट्रेन पकड़ना है. We are Mumbai people, right? We have to focus on career. So I started sports from school age. So keeping a balance of studies, then you're completing I was a science student, then I did a diploma in IT. So that studies
So I was not like a high ranking student. Average, chalo pass ho gaye, अच्छे marks मिल गए, gain the knowledge. But keep the sports on. I mean, dad was a sport cricketer, so he played up to Ranji Trophy, and even dad had to quit cricket because at those time when he was playing, cricket was not that highlighted and it was not paying good. So when he got a chance to a job opportunity abroad, so you had to leave cricket and then switch to career because that's your bread and butter, right? So career and sports balance कैसा होता है? Like you're running behind the sports is just your passion. You can never expect that it's going to give you some money. आपको पैसा मिलेगा स्पोर्ट्स के लिए. सब लोग पूछते हैं. I mean, you know, friends ask, तू पागल है क्या? अब तक खेल रहा है? क्या मिलता है? देखो कितना पैसा मिलता है. मतलब कुछ नहीं, उल्टा जेब से जाता है. क्यों? क्योंकि खाना है आपको, प्रोटीन्स है, सप्लीमेंट्स अगर आपको ले, वो भी ऑफ लेट वी स्टार्टेड नाउ. When I was like at my peaks, हम लोग ने कभी सप्लीमेंट्स नहीं लिए. नेचुरल डाइट्स, जैसे वो गांव के होते हैं ना, आप चने खाओ, उड़द दाल खाओ, राइस खाओ, कार्ब्स खाओ. तो ये जो बैलेंस डाइट कंसेप्ट है, ये अभी आया है. तो लोग, पीपल आर नाउ गेटिंग अवेयर ऑफ इट, यू नो, मोर एजुकेटेड. हम लोग नॉर्मल खाना खाओ, जो भी खाना मिला. स्पोर्ट्स के लिए जाते तो लिटरली हम लोग ने वड़ा पाव खाया है, ब्रेड बटर खाया है. तो इस टाइप से, बिकॉज यू नो एनर्जी लेवल मेंटेन करना, क्या लग रहा है, वीक लग रहा है, कंपटीशन के लिए 2 घंटे बाकी, अब क्या करना है? अरे पानी है यार, प्यास लग रहा है, यू हैव टू गो फॉर पीइंग, चलो कुछ खाते हैं, यू नो, दीस काइंड ऑफ. एंड कोचेस को भी इतना नहीं, जो भी कोच मिला रहे, सर आप अच्छा सिखाते. अब वो कोच वाज अ पुलिस. Yeah, so our coach was a police and he was a thrower, he was a javelin thrower. So but since he had the knowledge like हाँ running में ये होता है, so it was like चलो ये करो वो करो, but not a technical aspect. Yes. So that's how the initial stages were. तो वो एक पागलपन है, दूसरे क्लब्स में जाओ, देखो वहाँ के कोचेस क्या सिखा रहे हैं. वहाँ पे परमिशन के लिए उन लोग बोले यू हैव टू पे टू जॉइन द क्लब. तो चुपचाप स्टेयर केस पे बैठ के देखो उन लोग क्या कर रहे हैं. अच्छा ये प्रैक्टिस करते हैं, फिर खुद आकर वही ट्राई करना, क्यों फेल हो रहा है, यू नो, अदर स्पोर्ट्समैन. फिर फ्रेंडशिप जब होती है दूसरे लोगों से, तो यू नो दे ट्राई टू टीच अस, अरे ये टेक्निक है, इससे ये होता है, यू नो, दैट्स अ लर्निंग स्टेज. बिकॉज आइडियली इफ यू वांट टू जॉइन अ बिगर क्लब यू हैव टू पे मोर. और ऐसा था कि इट वाज एन इनिशियल स्टेज, स्कूलिंग स्टेज. तो मेरी पहले से आदत रही कि आई डोंट वांट टू गिव अ लोड एट होम. दो भी फाइनेंशियली हम लोग सब ठीक है, बट ऐसा लगता है ना कि खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद का पैशन है, तो खुद सपोर्ट करो. तो वो एक होता है. सो डैड यूज्ड टू स्टिल सपोर्ट, अच्छे स्पाइक्स लाकर देना, शूज लाकर देना एंड ऑल दैट, क्या कर रहा है क्या नहीं वाला. बट स्टिल आई वाज लाइक, जहाँ पे भी पैसे का आता था बोलता नहीं नहीं आई विल मैनेज इट, कुछ नहीं, सर ने फ्री में सिखाया, ये किया वो किया. तो ऐसा रहा है. तो फिर जब जॉब लगा, आई मीन आफ्टर स्टडीइंग एज व्हेन आई गॉट इनटू जॉब, तो सैलरीज कम थे. तो उसमें लाइक सेविंग भी करना है एंड देन स्पोर्ट्स के लिए, अरे यहाँ पे सप्लीमेंट्स महंगे आते हैं, नहीं छोड़ सप्लीमेंट्स नहीं लेते अपन, वील हैव एग्स. तो एग्स खाते हैं, तो यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, चॉकलेट खाना, थोड़ा एनर्जी मिलता है. तो ये सब चीजों से जस्ट ट्राइंग टू यू नो पुश योरसेल्फ. वाज इट चैलेंजिंग कि जिस लेवल पे आप खेलने गए, फर्स्ट जो आपका सबसे बड़ा स्टेट लेवल नेशनल लेवल मैच रहा होगा, डिड यू गेट नर्वस कि आई हैव नॉट बीन ट्रेन्ड द वे दे माइट हैव बीन? सो वो नो, आई मीन कैसे होता है, नर्वसनेस तो रहता है. एवरी कंपटीशन यू गो, जैसे यू नो कॉल्ड एज अ प्री कंपटीशन जिटर्स बोलते हैं. एक थोड़ा सा नर्वसनेस आता है ना, तो अच्छे अच्छे प्लेयर्स है, अच्छी बिल्ट होती है, उन लोग के किट अच्छे होते हैं, यू नो द काइंड ऑफ किट दे वेयर, क्लब सपोर्ट है, कोच साथ में खड़ा है, और हम लोग लाइक कोच सर जा रहे, हाँ चल ऑल द बेस्ट. कोच बोलेगा ओके चल करके आ, अच्छा करके. सो वी आर लाइक अब क्या करना है. हम लोग उन लोग को देखकर ऑब्जर्व करते थे. बेसिकली वी वर आल्सो लर्निंग, जो अच्छे एथलीट्स होते, तो हम लोग हार जाते थे, यू नो लाइक 6th 7th, हम लोग फुल जान लगाकर जंप मारकर रनिंग कर कर आते थे. सर हार गया, चल चल ठीक है कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो. सो दैट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस. उसकी जंपिंग स्टाइल अलग है, चलो वो प्रैक्टिस करते हैं. तो दैट वाज मोर ऑफ लाइक अ सेल्फ लर्निंग. तो इट वाज नॉट डीमोटिवेटिंग कि हमें नहीं आता, हमारा प्रोफेशनल टीम नहीं है, उनका कितना कैसा, इफ यू गेट डीमोटिवेटेड दैट, फिर आप स्पोर्ट्समैन नहीं रहना, फिर आप डरते रहोगे, आप खेल ही नहीं पाओगे. यू हैव टू सेल्फ मोटिवेट योरसेल्फ, यू हैव टू कीप पुशिंग, अरे कोई बात नहीं चलो ट्राई करते, उससे सीखते. इट्स लाइक ऐसा नहीं कि मुझे टाइम फ्रेम में इतने में करना है, बस करते रहना है. तो लाइक कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, चल ट्राई करते, जब तक बॉडी साथ देती है ट्राई करते, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, बी पॉजिटिव. वो एटीट्यूड से रहते तो यू कैन कीप पुशिंग योरसेल्फ. Wasim, how did this whole journey start? When did you and how did you decide that I want a sports career? How did this passion come in to you and you took this call कि अब athletics में जाना है, even though your father was is in cricket and Cricketer. that background. Yeah. Can you tell us that moment and that time, how that really played out with you? कैसे हुआ? Initially I started with football. Dad always wanted me to play cricket. So I used to play cricket. Me
and dad we both used to play. Then we used to go like cricket तो हर इंडिया का प्लेयर कहता है, गली क्रिकेट से लेकर क्रिकेट तो सबके इट्स इन द ब्लड, राइट? सो वी ऑल प्लेड क्रिकेट. बट मुझे कैसा था, डैड इज प्लेड टिल रणजी ट्रॉफी, तो मुझे भी कुछ करना है. तो क्रिकेट जाना, तो क्रिकेट के क्लब से पैड्स सीजन वो सब. आई वाज लाइक अरे नहीं. तो हम लोग सीजन टेनिस क्रिकेट खेलते थे, चल ठीक है, आई एम अ बॉलर. तो बॉल वसीम अकरम वाज अ फेमस बॉलर, so my name being वसीम, चलो फैन फॉलोइंग. तो वैसे था. बट आइडियली आई गॉट अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स फुटबॉल. वी वर अब्रॉड, आई मीन डैड के साथ हम लोग अफ्रीकन कंट्रीज में भी रहे. डैड यूज्ड टू गो फॉर जॉब, तो वहां पे फुटबॉल का क्रेज ज्यादा है. तो दैट इज हाउ आई गॉट क्रेज फॉर फुटबॉल. तो यहाँ पर भी इंडिया में फुटबॉल फुटबॉल खेलते रहे. अप टू 10th स्टैंडर्ड आई प्लेड फुटबॉल. आई वाज बोर्न इनटू स्कूल फुटबॉल टीम एंड ऑल. तो अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला. तो यार आगे नहीं बढ़ रहे, टीम हार रहे, तो हम लोग भी पीछे रहते ना, आगे कैसे बढ़े. तो एक बार हमारे कोच चेंज हुए, हम लोग ने बोला इस साल फुटबॉल नहीं है, चलो एथलेटिक्स है. तो जितने भी फुटबॉल प्लेयर लगते सब लोग चलो एथलेटिक्स में. तो अभी हम लोग के पास स्पीड और एंड्योरेंस था. दैट टाइम आई स्टार्टेड प्लेइंग लाइक 5000 मीटर रनिंग, 5 किलोमीटर मैराथन, क्योंकि स्टैमिना है. देन वी स्टार्ट 100-200 मीटर. अरे स्पीड भी है. तो वी गॉट, अरे जीत गए. तालुका भी क्रॉस, डिस्ट्रिक्ट भी क्रॉस, डिविजन्स वहां पे भी सेकंड थर्ड आ रहे. मतलब इसमें कुछ अच्छा हो रहा है. इट्स लाइक वी डिडंट न्यू व्हिच इवेंट टू सिलेक्ट, क्या करना है क्या कुछ पता नहीं. वहां पे लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने देखा, अरे ट्रिपल जंप, अच्छा ये कैसा है, कुछ हॉप स्टेप एंड जंप, ये क्या होता है पता भी नहीं था, आफ्टर 10th स्टैंडर्ड. सो इट्स लाइक ओके. तो आई कंटिन्यूड प्रैक्टिस. फुटबॉल खेलते थे और एथलेटिक्स. तो 11th-12th में भी एथलेटिक्स में एक स्टेट लेवल तक पहुंच गए थे. स्टेट पे हम लोग स्टेट प्लेयर थे. तो फिर देन आई डिसाइडेड लाइक व्हाट गेम इज सूटिंग मी. आई ट्राइड एवरी गेम, 5000 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर. मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड्स थे, दे वर लाइक वेरी फास्ट, नेचुरली होता है ना. तो आई एम लाइक मुझे किसमें आगे चांस मिलेगा. दैट्स हाउ आई सिलेक्टेड, चल ट्रिपल जंप ट्राई करते हैं. इट हैपेंड टू बी लेग पावर थी, स्पीड थोड़ी कम थी, सो इट गिव अ पुश. तो मतलब चलो ये गेम ट्राई करते हैं, समथिंग ट्रिपल जंप, number 3 lucky number, some kind of stupid things keep going on in your mind, and that's how I chose triple jump and then kept practicing. But तो ऐसा एक ट्रिपल जंप. करियर का सोचा नहीं, एक क्रेज था कि आगे जाना है, डू समथिंग. लाइक डैड रणजी ट्रॉफी तक थे, तो मैं एटलीस्ट आई मेक माय डैड प्राउड कि मैंने भी चल नेशनल तक खेला है करके. तो वो सोच थी उस वक्त. Remember the first big achievement or the first big moment for you when you were, आपने सोचा नहीं था मैं इस स्टेज पे भी आगे खेलूंगा, like you kept saying कि तालुका क्रॉस कर लिया, डिस्ट्रिक्ट कर लिया, it kept happening before you can realize you were through it, before you can realize you were through it. Was there a moment you realized कि करते करते कहाँ तक आ गए, कहाँ शुरू किया था? हाँ, मतलब एक बार ऐसा था कि कंपटीशन चल रही थी, स्टेट चैंपियनशिप थी और रमजान चल रहा था, रोजा था. तो आई वाज फास्टिंग बिकॉज आई नेवर मिस फास्ट. तो सर मुझे अप्रिशिएट करते थे, अरे नमाज का टाइम होता है, तो मैं स्टेडियम में भी नमाज पढ़ता था. अरे सर नमाज का टाइम हो गया, प्रैक्टिस के बीच में नमाज के लिए जाओ, रोजा. अब रोजा सर बोले, तू रोजा क्यों रखा, कंपटीशन है, स्टेट चैंपियनशिप है, क्लब के आपको पॉइंट्स चाहिए, रोजा रखे तो कैसा. मतलब सर मैं कर लूंगा, देख मर जाएगा कुछ होगा, बोल मत मुझे कि रोज यू हैव टू गिव योर फुल बिना कुछ खाए पिए पूरा दिन. हाँ, रोजा में इट्स लाइक कंप्लीटली ड्राई, राइट. और मैं प्रैक्टिस भी रोजे में कब करता था, सहरी के इमीडिएटली बाद. तो पूरा दिन तो मतलब स्लॉग्ड आउट क्योंकि खत्म हो गया. तो वो था और कंपटीशन थी. एंड कंपटीशन वाज अराउंड लाइक 4:30 इन द इवनिंग और आपका रोजा सुबह 4:30 AM है. सो 12 hours गैप था, नो वाटर नो फूड. So warm up करने मुझे actually nervousness हो रहा था, like क्योंकि if I do warm up I lose my energy. Yes. I need to preserve my energy. So that was the moment I was like trying to conserve my energy and just stretch out flexibility वगैरह. और race start हुई and luckily I bagged a gold medal in that. Wow. वैसे हुआ. So I was like अरे अल्लाह का कुछ तो करम है, जीत के सर बोलता अल्लाह का तेरे पे रहम है. So it was like a luck or I don't know what. I just happened to bag a gold and it was a special gold. I love that, even equivalent to an India gold, क्योंकि रोजे में वो गोल्ड जीता है. और फिर बाद में सर को क्या लगा, भाई इसका लक अच्छा चल रहा है, गोल्ड मेरा. इमीडिएटली रोजा खोलने का टाइम उस वक्त 6:30 का था और 6 o'clock का रिले था. सर बोला रिले भागेगा, क्योंकि एक एथलीट जो हमारा था उसको क्रैम्प आ गया. ही वाज अ गुड एथलीट. सर बोला जान बचा, एनर्जी बचा. हाँ सर जोश में कर लूंगा रिले. तो ठीक है, रिले भी भाग लिए. रिले में सिल्वर मेडल मिला. तो ये सर आप स्टार्ट करो क्योंकि तेरा ये है. तो रिले बैटन क्रॉस किया और मैं सीधा कोलैप्स्ड. कुछ लोगों ने मुझे उठा के साइड में रख गया, अरे भाई इसको कुछ हो गया. सर पे पानी डाल रहे और रोजा खोलने के लिए 15 मिनट बचा है. तो वो जो 15 मिनट का फेज था, कब टाइम होगा रोजा खोलना है
दैट वाज लाइक लिटरली स्ट्रगल टाइम, पर लोगों ने अप्रिशिएट किया, रोजा खोला तो सब लोग ने ऐसे फ्रूट्स लाके दे रहे, अरे खा तूने आज जिताया है, मेडल लिया है. सो दैट वाज अ वेरी You स्पेशल मोमेंट. remember that 15 minutes was longer than that 12 hours सुबह के That साढ़े awful चार 12 से. hours, yeah. Imagine people are putting water on you, the wet towels on your neck के प्यास लगी And है, you can't you should eat, not you collapse, can't क्या drink. करना है? Yeah, I can't eat, रोजा है. तो जब आजान सुना तब एक फ्रेंड ने खजूर लाके दिया, ले भाई रोजा खोल, फिर पानी पिया, देन आई वाज लाइक रिलीफ. फिर मेडल सेरेमनी के लिए हम लोग जाकर मेडल लिए. Wasim, this 12 hours journey that you explained, this one day event was, I think it defines a lot many whole journey of your entire struggle period. There was a phase where for a couple of years, because of a rare condition, you had to hold back. Like after all the achievements, again, Correct. you had to hold back. And that too when the Commonwealth was being hosted by India. So ultimate moment for you. Correct. So how did True, that true. that really go through you? Was it longer than that 12 hours का journey जो आपने gold medal जीत के खुद को rare पाया? I mean, how difficult was the other one? जो वो 12 hours जर्नी, वो जो रोजे के जर्नी थे, दैट वाज रियली हैप्पी मोमेंट, दैट मोटिवेटेड मी टू पुश माई सेल्फ मोर कि और अपन कुछ कर सकते हैं. So that was the time when I decided that I think I can go ahead. Like national से at least एक India level player तो बन जाओ. Like some people know कि India player है. तो वो एक है कि इंटरनेशनल मेडल नहीं, इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट. छोटा सोचता है अभी कौन बड़ा. ओलंपिक्स तो इट्स लाइक अल्टीमेट ड्रीम. पहुंच गए तो बड़ी बात. आई मीन वैसी थी. तो और ये जो मायोसाइटिस हुआ 2007 आई यूज्ड टू डू नाइट शिफ्ट. एक कन्वर्जिस करके कॉल सेंटर बीपीओ है, वहां पे मैंने ज्वाइन किया था क्योंकि वहां पे सैलरी अच्छी थी. और मेरे नाना वो टाइम पे बीमार थे एंड ही ऑलवेज वांटेड टू गो टू हज. तो ही हैड लेफ्ट होप. आई मीन ही वाज बेडेड एंड अब नहीं हो पाएगा, आई एम एज, पैसे नहीं है, थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज थे. तो आई अश्योर्ड माय नाना कि आप बेड से उठ जाओ, मैं आपको पैसे देता हूँ, तो आई विल गिव यू सपोर्ट, आप चालू करो, नाना नानी आप दोनों हज के लिए तैयारी करो, आप ठीक हो जाए. बिकॉज ही हैड लेफ्ट होप. तो आई वाज मोर ऑफ ट्राइंग टू मोटिवेट हिम कि आप चलो उठो, प्रैक्टिस करो चलने की, हज में बहुत चलना होता है, स्ट्रगल है, आपकी एज है, मैं पैसे जमा करेगा. आई सेड हाँ करूंगा. So that time my salary was around like 6-7 thousand a month. I used to work for a company called CMS. So उसके बाद हम लोग को बीपीओ का फ्लंग बॉम्बे में बहुत चला था, तो सैलरी हाइक अच्छा था. So as an IT support, I joined a BPO. The salary went up to like 20,000 a month. So I was like, wow, एक 5,000 से बड़ा jump आ. So what I used to do is started saving क्योंकि नाना को promise किया है. तो next year नाना को हज जाना है. So I had this 1 year to gather about as much as I can. तो completely saving my expenses, I would cover up in 2-3,000 rupees, खत्म बस, बाकी पूरा saving. तो वैसे करते करते जब टाइम आया, I paid the first installment and everything and then took some support. डैड ने भी पैसे दिए, अंकल ने वगैरह, चल तो अच्छा काम कर रहे, तो they supported जहाँ पे भी थोड़ा कम पड़ गया. So that is how Nana went. Ideally the day he went to Hajj, I was like चलो एक fulfill हो गया target. तो उनकी वो दुआ थी and that was the day I resigned. So I said like अब night shift में हालत खराब. I used to sleep only 4 hours. तो क्या होता था, इट वाज एन ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट, तो शिफ्ट केप्ट चेंजिंग. तो उसमें घर पर आना एंड देन फिर प्रैक्टिस, क्योंकि अगर सो गए तो उठकर फिर प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी. सो एज लॉन्ग एज यू आर फ्रेश, तो नाइट शिफ्ट कर कर आना, थोड़ा सा नाश्ता करना एंड देन गो फॉर प्रैक्टिस. वो प्रैक्टिस कर कर देन यू आर लाइक कोलैप्स. फिर उठो एंड देन कभी पावर कट्स के इशू थे, ऐसे कभी कभी होता है ना. आई मीन यू आर एट प्लेसेस, पावर कट इश्यूज एंड डे टाइम यू कैन नॉट स्लीप. एक मोमेंट होता है चहल पहल. तो वो पूरा साल, I mean, you can say I didn't sleep. So that after resigning the job, I said now I want to take like around 1 or 2 months break. कि रिलैक्स होना है, कि नाना हज को चले गए, अपना टारगेट, now I'll practice and make up health. क्योंकि उसमें क्या हुआ था, immune was getting affected. So any injury that you get during this night shift phase, it doesn't heal quickly. ये प्रॉब्लम होता है. तो आई टुक अ ब्रेक, और वो ब्रेक में जब मैंने बॉडी बिल्डिंग, जिम वगैरह सब स्टार्ट किया, तो उसमें वो स्लोली पेन मूवमेंट चालू हो गए, काइंड ऑफ अ केमिकल इम्बैलेंस, एंड देन मायोसाइटिस हिट मी. एंड देन आई वाज एट वर्ज कि अब 2010 में 3 years लेटर देयर इज अ कॉमनवेल्थ गेम. तो 3 साल पहले से 2007 से आई शुड स्टार्ट प्रैक्टिस. वो प्रैक्टिस चालू किया 2007 एंड फिनिश आई एम डाउन बेडरिडन. So it was like very depression. जब डॉक्टर ने डिटेक्ट किया और बोला ये है माइनस, so it was like on a scale of 1 to 10, you are at 9, at level 9. Now you are at -1.
तो वो एक फेज था. आई मीन यू couldn't मूव. आई मीन इमेजिन इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग, आपको साइड चेंज करना है तो मॉम डैड सपोर्ट करते थे. मॉम डैड ने बहुत सपोर्ट किया, बिकॉज मायोसाइटिस इट्स नॉट जस्ट इफेक्टिंग यू, फैमिली को इमोशनली बहुत हैम्पर होता है. यू आर लिटरली लुकिंग एट योर सन लाइक वॉकिंग विद अ सपोर्ट. पैरालिसिस भी नहीं है, यू कैन मूव, बट कंप्लीटली पेनफुल. सो मैं उसमें क्या करता था, नमाज नहीं पढ़ पाता था, कुछ भी नहीं हो पा रहा था. तो वो एक स्ट्रगल अलग था. आई मीन जस्ट सिटिंग ऑन अ बेड एंड क्राइंग एंड प्रेइंग. तो फिर डॉक्टर्स क्या करते थे, अगर कंप्लीटली हालत बहुत खराब होती, दे यूज्ड टू गिव पेन किलर. तो वो पेन किलर, सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, फ्राइडे प्रेयर्स के पहले मैं डॉक्टर को घर पे बुलाता था. तो यूज्ड टू गिव पेन किलर. तो वो पेन किलर लिटरली कैसा करता पता, खिलौना होता है ना, चाबी दिया हुआ, यू गिव अ की, तो वो चल रहा है, जैसा चाबी खत्म हो गई बंद रुक जाता है ना, तो पेन किलर वैसा करता था. पेन किलर दो, आई कुड गो फॉर नमाज, ऑफर नमाज, और घर पे आने तक असर खत्म, अगेन ऑन द बेड. ऐसे ये सिचुएशन से मैं फ्राइडे की नमाज को जाता था, एंड देन फिर होप्स कंप्लीटली खत्म. उससे रिकवर होना, इट टुक अराउंड 6 months फॉर मी टू नॉर्मली वॉक. फिर अनदर लाइक 6 months, तो उस पर मैंने आई स्टार्टेड स्टडिंग कि क्या होता है, हाउ डू पीपल रिकवर एंड ऑल दैट. देन आई स्टार्टेड कोचिंग, क्योंकि जो भी सीखा मैं, चल मैं नहीं कर पाया, आई कोच समवन, एटलीस्ट वो प्लेयर तो आगे जाए. तो आई स्टार्टेड स्कूल, जो मेरी स्कूल थी, स्पोक टू प्रिंसिपल, तो उन्होंने परमिशन दिया, ठीक है यू कैन कोच. So I used to just stand, and फिर मैं slowly started pushing myself, jogging with them, showing them, अरे ऐसा नहीं ऐसा करना है, so that mental push. तो वो करते करते I used to started practicing with them. करना, so it was a long struggle. It took me after like 2010 commonwealth games तो गया खत्म. 2012 में I again started district level पे, back to from nationals coming to a district level, compete किया. It was a comeback, I came third. I said hope है, उम्मीद है, कुछ तो है. तो वो हिसाब से स्लोली स्ट्रगल, स्टेट तक जाकर हार कर आते थे, नहीं हो पा रहा है. फिर जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आई मीन यू आर एजिंग राइट, सो यू कैन नॉट बी प्लेइंग. तो वो एक फैक्टर भी इफेक्ट करता है. तो फिर कुछ साल का मैंने ब्रेक ले लिया स्पोर्ट्स से, लाइक 2-3 years आई वाज लाइक नॉट प्लेइंग, 2015-16 तक. बट आई वाज मोटिवेटिंग, कोचिंग, थोड़ा सा ऐसे करते करते अगेन एक वो पागलपन आया कि चल कुछ करता है, फील फिट नाउ. अगेन स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग. फिर बाय दैट टाइम आई हैड ऑलरेडी क्रॉस लाइक 30-32. So now at the age of 35, I happen to bag that medal. वो पागलपन. But again, the next part of the whole story, where you went for the Malaysian Games and you again got us a medal there. How did you handle yourself there? I mean, coming back after a break, was it tough mentally and physically? I mean, yes, you were preparing over years, you took your break, but how was it to perform again after a long break? It was very difficult, and after a break, it was not only a break in sports, it was also in your career, because I had lost job. I didn't have job, so getting back into a job, it's like people ask why there's a gap in your CV for 2 years and all. So again, jumping back to that job career, job struggle, so going through all those odds, then IT में कैसा था, I was enhancing, so I got some international opportunities. तो पैसा अच्छा जमा हो गया, तो चलो अभी पैसा है तो क्या करें, आप कुछ पे थोड़ा खुद पे अगेन खर्चा करें, अच्छे स्पाई. एक टाइम होता है ना इंडिया में, अपने शूज पहनते हैं, यू गेट अ बेसिक शूज, एक जैसा कि एक्शन शूज है, और फिर आप एक प्लेयर को देखते हैं, ही इज वेयरिंग एडिडास, ही इज वेयरिंग नाइकी, दैट लेवल. और फिर जब अपने पास पैसा आता है तो अब मैं एडिडास के स्पाइक्स लूंगा, अब मेरे पास पैसा है. सो देन यू टेल योरसेल्फ, चला एडिडास का स्पाइक्स पहनता है, लेकिन परफॉर्मेंस है क्या उतना, तो अपनी लेवल उतनी बढ़ाओ कि यू डिजर्व टू वेयर दोस एडिडास स्पाइक्स. तो पुश योरसेल्फ, देन यू बाय स्पाइक्स, देन यू गो. तो वो एक अपने को एक फील गुड होता है ना, अब अपना भी लेवल कुछ है. तो वो हिसाब से, तो इट वाज अ ग्रेट स्ट्रगल. फिर अगेन व्हाइल आई वाज गोइंग फॉर मलेशिया, आई हैड टू टेक अ ब्रेक. सो जॉब मुझे क्विट करना पड़ा. आई सेड बिकॉज आई वाज समहाउ फीलिंग दैट आई थिंक आई कैन डू इट, सो आई टुक अ ब्रेक. तो उसमें क्या हो गया, अगेन यू वर ऑन योर सेविंग्स. तो फॉर प्लेइंग फॉर मलेशिया आई नीडेड स्पॉन्सरशिप, क्योंकि I couldn't shell from my pocket, I didn't wanted to take from home. I said चलो इंडिया के लिए खेल रहा है, कोई ना कोई तो मिल जाएगा. जब गए स्ट्रगल के लिए, प्राइवेट कंपनीज बोलते हैं ओके आप खेलते हो, वेरी गुड, हमारा क्या फायदा, आपको कवरेज कितना मिलेगा, टीवी पे आओगे आप, क्या मिलेगा. सो इट्स लाइक इट वाज हार्डली अ रनिंग शॉर्ट ऑफ लाइक 50,000 समथिंग. सो आई वाज लाइक यार 50,000 का तो आप, 50,000 ठीक है ना, तो 50,000 अगर मैं PR में खर्चा करूँ तो मेरा तो ज्यादा पब्लिसिटी होगा. तेरे पे देने से क्या है, कितने चैनल कवर करेंगे. आई वाज लाइक मुझे नहीं पता, मैं इंटरनेशनल करूं, इंडिया रिप्रेजेंट करूं, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट. दिस वाज द स्ट्रगल. एब्सोल्युटली एवरीबॉडी डिनाइड.
So one of my friend, he was well associated with Rahul Kanal in Bandra, of Yuva Sena. So he happened to say that मेरा दोस्त है यार खेलता है बहुत टाइम से थोड़ा सपोर्ट कर. So Rahul Kanal, he actually helped me meet Aditya Thakre ji, saying that he was of Yuva Sena. तो बोले यार प्लेयर है उसको खेलना है. And that time it was like इंडिया गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिल रहा है, प्राइवेट कुछ नहीं. बोले चलो ठीक है, कितना है 50,000, नो प्रॉब्लम, आप खेलो, देश के लिए खेलते हैं, खेलो. So he just happened to said okay for it. I was like wow. So I always like somehow grateful to him that किसी ने एक है ना अल्लाह बंदा भेज देता है कि चलो दे दे. तो वो एक अल्लाह का बंदा था, चलो बता उसने बोल दिया कि चलो ले लो. तो आई हैपन टू देन एक मोटिवेशन मिलता है, चलो स्पॉन्सरशिप का भी जुगाड़ हो गया, अब और प्रैक्टिस करना है क्योंकि इज्जत का सवाल हो गया. अभी इतने बड़े आदमी ने अपने को पैसा दिया तो अब मेहनत तो करना है. So that is all like went to Malaysia, and that moment was again the whole life goes through when you're standing warming up at an international level. अगर मैं हार गया तो pressure 50,000 वापस देने पड़ेंगे. It's like going through all those odds, and then it's like it's a very precious moment. I mean like pressure hota hai, warm up, and then you go and perform. So and luckily you like happen to get a medal. I think Wasim, you just call it luckily. It's not luck. It's a lot of hard work and a lot of perseverance and patience throughout. You never realized you were coming to ground zero every time. एक एग्जाम्पल देख लो आप, भाग मिल्खा भाग मूवी. It was a movie biography of Milkha Singh ji, right? Yes. The great athlete of India. The performed by Farhan Akhtar. Okay. Now एक आप gimmick देखो इंडिया में, Farhan Akhtar, he had to look like an athlete. Okay, for the movie, the body build, the structure, the choreography, he had to look like an athlete. तो उनको 1 साल लगा supplements, protein, body build करने, running सीखने. There were a lot of coaches. मिल्खा सिंह जी भी थे, उनको कोरियोग्राफी करने, मतलब रनिंग कोरियोग्राफी दिखाने वगैरह. तो 1 साल का स्ट्रगल एक एक्टर को एथलीट दिखने के लिए. अब सोचो वो एथलीट जो इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है उसके लिए क्या मेहनत होगी. This is crazy. I mean, no offense, but that's the better reality. I mean, India के आप देखो ना, I mean, आज I'll tell you the honest part. Today when you go, I say I'm an athlete, oh good, very good, ऐसा. But when you go to a media, no offense for media fraternity, but लोग कैसे है ना, जो दिखता है वो बिकता है. So it's like कौन हो आप, हम नहीं पाए. Go to Google, like how many followers you have on your Insta, कितने million followers है, क्या है. People judge you that way. तो मैं बोला ओके, एक जो आर्मी पे जो सोल्जर लड़ रहा है उसके कितने फॉलोअर्स है, उसका तो इंस्टा अकाउंट भी नहीं है, but he's supporting. So I have played for the country. I feel proud, my parents feel proud for me, my friends feel proud. बस हो गया. I don't need to show off के तुम क्या हो. Now today I'm into like celebrity coaching. I give fitness training to celebs and all that. But at times ऐसा होता है, they don't say that whom you're training under, कि कोई पहचानता नहीं है ना. हाँ वो एक इंडिया प्लेयर है, वो खेलते हैं. But when would he put my name like, अरे मैं उसके अंडर में ट्रेन करता हूँ, when I'm highlighted. Very, very strong message and very needed message. I will come to this point at the end, but one thing I want to take from here, you have gone into training and a new form of fusion training. I think fusion body training, exercise training for celebs and athletes, right? What is this all about? I mean, inspiration from your sport is one story of you, IT professional is another part of you, and now a trainer as a fitness trainer. So could you tell a little bit more? Yeah, so that's a change of profession. IT, 16 years I was into IT profession. After 2015 when recession hit, so and after that, in 2018 I played for India. So there was a year break which I took. So again, going back to IT, the market had crashed down. There were no jobs available. At that time, I was a level of IT infrastructure manager, a senior manager. तो उसके बाद getting back into job नहीं था. तो फिर what I did is started my own firm कि चलो I had good contacts, एक reference है, starting IT. But fitness में कैसा हुआ? Before coming to this, 2015 I was in Congo, Africa. Yes. तो वहां पर I got trained under coach Rees from UK. वहां पे एक कैंप लगा था. So it was for the coaches, जैसे इंडिया में NIS होता है. So I luckily happened to reach there. I paid some like $1,200 for that. बोला चलेगा. मतलब they said we cannot give you certificate and all because it is for our internal thing. तो कुछ जुगाड़, references, बड़े लोग के references से I got into those trainings. मतलब मुझे सीखना है बस. So there I learned a lot of advanced techniques which are rarely now coming to India. So that is from analyzing a body, from a kid's body to a person's body.
कि कैसे बॉडी एनालाइज करना है, कैसे बॉडी को आप स्टडी कर सकते हैं, कौन सा इवेंट किसको सूट होगा, जैसा वेट, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. वेट तो यू गेट थ्रू काइंड ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, तो मेल बॉडी, फीमेल बॉडी, किड्स बॉडी, सीनियर एज बॉडी. तो वैसे वो नॉलेज लेकर आई केम टू इंडिया एंड आई वाज लाइक चलो किसको तो ये नॉलेज बांटेंगे, बढ़ता है तो कोच करेंगे, क्योंकि खुद पे नहीं होता है. तो somehow I implied that on me. I played and then medal मिला, and then after that papers में कुछ articles आए थे. They called me, gave me a title of एकलव्य. I mean self coached, like महाभारत में थे ना, उनको कोई coach नहीं था. Used to watch and learn, right? Career, age factors, health factors, और फिर बाद में कंटिन्यू. तो celebrity training क्या हुआ, जॉब नहीं था, तो what will I do? तो I said okay, I'll start coaching. I didn't think about पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, वो एक दिमाग में था ना कि I've learned a lot, I really need to share it. तो local gyms में I started like training and it was affecting very good. Weight loss बोलो, weight training बोलो. I mean especially for female bodies it is very difficult for a gym trainer to understand क्या होता है ना, anatomy change होता है, body building workouts अलग होता है और plyometric exercise. So I used to use a fusion workout, mixture of athletics training, bodybuilding training, then your nutrition concept, CrossFit, and your functional. तो ये ट्रेनिंग का फ्यूजन करके आई यूज्ड टू पुश ऑन अ वेरिएशन बेसिस. तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते थे. जो इंसान ने कभी लाइफ में स्पोर्ट्स नहीं खेला है, आई कैन गिव अ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टू दैट पर्सन. ही कैन नाउ गो एंड प्ले एट एनी एज, improve the core. So that I could train. Yeah. So that's what so एक luckily references से then I got into a gym. तो वहाँ पे I could train. तो वहाँ it's a celebrity gym. तो वहाँ पे सीखा, लोगों से पहचान हुई. Trying to show yourself. तो लोग देखते, they judge you. If you're a trainer, you need to be like a bodybuilder, six pack. वो एक prototype होता है ना. तो मैं बोला यार ये क्या गलत बात है. What do you look forward to now, Wasim, from here as a sportsman? Where do you aim to be in future? Are you still chasing your dream? How is the? I've taken a break after that medal. After the India medal, I've taken a break. Now I'm thinking, because now I'm 36, so I'm thinking now to start playing in Masters. That is after like your 30 ages, you can play Masters competition. Okay. So because open competition is very difficult to hop in again and go to that level of performances. Okay. It's not easy. So I'm now starting, I'll be continuing in Master Games and then continuing my training, because I don't want to quit. It's like till I die, I want to play. I don't want to retire. Your story is not just inspiring, but realistically, I still want to believe ऐसा होता है. You've said everything happened luckily, but nothing seemed luckily. To hold on to it itself is not by luck. I'm really wishing that your honesty and your energy takes your show to a lot of people we can take it to. And we'll try our best to give it the justice around the work that we do, and hope you will like it. More than anything, it is first you who should like it. Thank you.